Your bitterness is because of your political failure. We can't help it. If you confine your entire approach to this kind of sloganeering and using those very flowery languages, then it causes loss in the substance of your entire approach. If one particular party disrupts the entire proceeding of the House, preventing other MPs from different regions to take up their case, that is bad. When we raised the issue strongly in our time when we were in opposition, we made it a point that once we make an issue, it is worthy of taking it to logical conclusion. Good afternoon, everyone. Today we have Kiren Rijiju, Union Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs, as our guest for Idea Exchange. As we know, Parliament session, winter session is going to start on Monday, so he's going to have very tough time. He's one of the ministers who is, always having a very difficult time during the session. So let's discuss and exchange our ideas about the session mostly. Uh, Welcome to the Indian Express Idea Exchange, Mr. Rijiju. Thank you. Yeah. So, the last two sessions were kind of washout with the opposition raising several issues. Now that the BJP and the ruling party, the NDA, has a very significant and splendid electoral victory in Bihar. So, but still, what are your expectation for the session? As we know that the opposition is up in arms against the government over this SIR, which is taking place in different states. So, what is your expectation for the session? In the beginning, I want to make a corrective statement. Last session and the previous one also, technically, there were lots of disturbances, but from the business of the government's point of view, they were very successful. In fact, the last session was most productive in my more than 2 decades of parliamentary experience. Very productive session. And second point which I want to make is the washing out of session may be bad for the opposition parties especially, and particularly the members. But for the government, we are worried only because the debates and discussion did not take place for those critical and important bills and other issues. From the purely business point of view, we have passed so many bills, but I don't want to rush it. So technically, it's not a washout session, but from the democratic spirit point of view, yes, disturbances of house is painful, and people don't like it that the parliament rushed through important bills. Like you said, that it is casting, and don't you think that it is casting a shadow on the efficiency of parliament? Because in a democracy, the parliament has to function. And also it depends on how you measure the success and the productivity, just in terms of like how many bills are passed, without any discussion. Don't you think that it is actually casting a kind of black mark or a shadow over what we call the mother of democracy? It all depends on how the opposition party behaves. Because government comes out with agendas, and all our bills and other important businesses are put before the house, and before that we table all those in the agenda of the BAC. Once the agenda is finalized, it is up to the house
to take a call on how much it is to be deliberated upon. The time, everything is fixed in the Business Advisory Committee. And as a Parliamentary Affairs Minister, I normally uh, listen to the opposition request for longer discussion period of time. In last, all the bills, if you see, including the discussion on Operation Sindoor, and before that the Waqf Amendment Bill, it had a record length of discussion. In fact, it broke all the previous records. We went till morning for those discussion. So that means government is prepared if opposition is ready to listen. And the other important bills like those online gaming, the sports governance, and so many important bills, we had given ample time. In fact, some of the bills we agreed to discuss for 12 hours, which would lead the discussion for 2 days. But then the opposition party comes out with one agenda and they don't allow other business to be discussed thoroughly, then it's a bad. See, you have to be very clear about what transpires in the discussion of the BSc and what happens in the House. If opposition party has an agenda or particular issue to be taken up, they have all the rights to raise it. But that should not prevent the other issues to be taken up. Suppose you raise one voice of your concern for a matter, say SIR, you want to raise it. If there is a technically difficulty in taking up the discussion, then the chairman, the chair of the house, will specify those reasons. And then we can take up another subject because the whole country is not bound by one issue. There are multiple issues which are equally important. At the same time, different MPs have different issues. So if one particular party disrupts the entire proceeding of the House, preventing other MPs from different regions to take up their case, then it's bad. Okay, you have an issue to be taken up in the 0 hour, you raise during 0 hour. When the 0 hour time is over, it is time for bill or it's a time for another subject to be taken up, then the other issue should not prevent the next issue to be taken up. So that is how we can make the parliament very vibrant and efficiently functioning. Otherwise, if you stick to one issue, then that will lead to disruption of the house and what you term as a washout. But we will never allow the parliament to be washed out because we are being given the mandate by the people and we have a duty to do our job, our business to be passed through the parliament. So technically, as I said, washout is not correct. We will not allow it to happen. We have to transact the business for the sake of our nation, for the sake of the people. But Mr. Rijiju, I've been seeing Parliament since 96, 97. And, I don't see the kind of efforts which the previous governments, whether it is UPA or whether it is NDA, used to take to get the opposition on board on several issues. Other than this ritualistic, one day ahead all party meeting or floor leaders meeting, there is nothing, constructive in that, in if I can say that, happening to get the opposition leaders, whether it is in the Rajya Sabha or Lok Sabha, on board before and even in between the session. Why is it so? This ritual meeting, that, how is it happening? No, beyond ritual meeting, we have many courtesy meetings also. I'm regularly in touch with all the opposition leaders and they come to my place. I visit them. We exchange informations and messages. So that will continue. That cannot be stopped because after all, we are together in the house. House belongs to all. But the perception which you mentioned that there's not enough efforts being made to get the opposition on board, that is not true. For example,
I'm giving you a very precise example. When the matter for removal of Justice Verma was taken up, I had discussion with both leader of the Oh, maybe opposition. that was an exception because you No, wanted a I'm just giving an consensus. example. So both Sri Rahul Gandhi and Sri Mallikarjun Kharge, I spoke to both of them, had a meeting, and then we agreed that we will take up this matter in Lok Sabha. So there was understanding. What was necessary to get into secret signing for a petition to be moved in Rajya Sabha? There are issues which are ethical. There are issues which are a matter of trust. We may have differences in parliamentary democracy, but the trust and ethics are important part of the procedures and the rules of business laid down. So once the trust is broken, then it leads to some cascading effect on the other normal routine works. So my point is, the functioning of the parliament is important not for the government alone, it's equally important for the opposition parties. Another point is very suggestive. I want to tell my opposition friends, if they want to use the parliament for their political purpose, then they should better use it more wisely. By disrupting the parliamentary proceedings, they are losing elections after elections, which means that misusing the parliament forum for driving political agenda not necessarily brings political dividends. When we raised the issue strongly in our time when we were in opposition, we made it a point that once we make an issue, it is worthy of taking it to logical conclusion. Whether it is the Commonwealth scandal or 2G, those had a political impact and you are all witness to it. Those were important reasons of the fall of the UPA government. But on the contrary, the solid issues which government has brought out in terms of implementation are opposed by the opposition party in the parliament by disrupting the parliamentary proceedings are in fact a disaster for them politically. So I am not in a capacity to advise the opposition parties. But I would like to suggest that be more wise in terms of putting the house in ransom or trying to make the house victim of their narrow political agenda. Political differences will remain, but parliament should not become victim of the differences in our political ideology or differences or in terms of our basic conduct. You wanted to, move fast on the removal of Justice Verma and with a consensus. What happened to that? Is it going to happen finally? Now, as per the laid down rules, the process has started. The committee which has been given the mandate to start the inquiry, they are conducting it, and the eminent retired judges and eminent juries, they are taking the matter into logical conclusion. Yeah, they will come back and report to the parliament, and once it is tabled in the parliament, then the next is the removal process by Parliament. putting discussion for voting. Okay. Now I'm opening the forum for a question. You introduce yourself for the video purpose. I'm Vikas Pathak. So, sir, generally, this every session of Parliament we find that disruptions happen, and then each time there's a statement from the government. You talk to reporters and you say that it's very bad on the part of the opposition not to allow discussion in Parliament. But sir, when the UPA was in power, in fact, Sushma ji and Arun Jaitley ji had very categorically stated that obstruction of Parliament is also part of democracy. So, how do you then see something very different being done by the present opposition that was not done by the BJP and opposition?
there is a very evidently perceptible difference in what BJP adopted as a, um, uh, putting our matter strongly in the House, which is amounted to disruption. So the obstruction of the proceedings in the Parliament deserves some kinds of justification. For example, last session and before that, they raised this SIR issue. The matter is very clear. I had mentioned, even the speaker had mentioned about the ruling given by Balram Jakar when he was the speaker. Yes. Discussion about any constitutional authority, which is clearly an autonomous body, is not advisable. Number one, because government cannot speak on behalf of the authority. Suppose you want to discuss about the Supreme Court functioning. It is different from judicial reforms. Government can always bring some kind of judicial reforms bill. But to discuss particular about a judge or about the functioning of Supreme Court, then the Supreme Court judges are not available in the House to defend themselves. So that is why when there are matters sub judice or matter related to election commission and courts, the stand has been that since they are autonomous constitutional body, they cannot be discussed in the floor of the House until or unless it is related to some reforms which government can always bring. SIR is an administrative matter. It is not reforms by the government. It is an administrative action taken by the election commission. So for that, government cannot defend or justify, or government can support the move. But the action which resulted from the decision of the commission itself, how can parliament take up for discussion? That is why there's a differences. If there is apparently a suo motu case to be taken up, government will be always ready. For example, there's a bomb blast, there's a severe natural disaster. Government always comes out with a suo motu statement and ready for the discussion. But then you can't force the government or the House to take up for discussion on a matter which is very similar to the SIR being initiated by the Election Commission of India. If the matter is discussed, then the subject has to be widened. Entire election commission working or reforms or anything larger matter, definitely we can think about. So when BJP said opposition party can use obstruction as a means or an instrument to put forth your viewpoint, there is reason. It has to be a valid reason. You cannot just put the House into ransom. Secondly, about the conduct. I remember when Advaniji was the leader of opposition, he had clearly told the NDA MPs, while we protest, normally we should not go to the well. When we are forced to go to the well, then ensure that we don't cross the half point, which is the side of the treasury bench. But now they come all the way and they stand in front of the Prime Minister, the Raksha Mantri, Home Minister, and they block physically. If you can go back to all the clips you see, we have never taken the placard and just put it in right in the front of the Prime Minister and all this. We never did that. So there are huge difference in terms of our methodological in protesting or putting our point on the House and what the oppositions are adopting to. Yeah, so sir, there's no doubt, like if we compare with the Manmohan Singh government or even the Atal Bihari Vajpayee government, parliament proceedings seem much more acerbic these days. There's a lot of bitterness that is pretty much visible. And of course, there have been instances where the parliament, when the Prime Minister is speaking, there are obstructions, there are walkouts when he's speaking in parliament. There have been multiple such occasions. And that apart, of course, suspensions. On one particular day in 2023, I think 78 MPs got suspended. So as a minister, because as you believe and you say that parliamentary functioning is very central to democracy,
Does the government intend to actually talk it out with the opposition, different parts of the opposition, and say that let us try to have a more fruitful session? Why is that not really happening? I fully endorse the spirit of your question and also intent. We are always ready to discuss with the opposition members, especially the leaders of the party. See, you have to understand one thing. The bitterness in the approach or in the style in which you are witnessing these days is quite evident. If your bitterness is because of your political failure, we can't help it. If you want to take the whole course of debate into rhetoric, or you use what like Gabbar Singh ka tax or this kind of hydrogen bomb, if you want to confine your entire agenda to headlines and social media trending or social media, whatever viral it goes by using one catchy word and vote chori, this thing. If you confine your entire approach to this kind of sloganeering and using those very flowery languages, then it causes loss in the substance of your entire approach. We don't believe in this kind of approach and style. We believe in intense debate and discussion. If you see the debate on the 75th years of the adoption of the Constitution last year, many senior ministers spoke. Even I intervened. Honorable Prime Minister concluded the discussion. How well our speakers were prepared, the NDA MPs and particularly the BJP ministers, well prepared speeches. But on the contrary, what the leader of opposition did, he carried those pictures of the god, Shiv ka photograph, this thing. So if you want to catch the headline by displaying this kind of not permissible things to be done supposedly by action in the house, then it diminishes not only the standard of the house but your stature. Why people of India are not taking Rahul Gandhi ji seriously is because primarily he indulges in rhetorical and kind of a childish act in the house. It is purely influenced by some of his coterie or advisors who believe in headlines only. Headlines is for news for one day. It's not for long-term politics. We are matured people. I have been in politics for last 35 years. We are always there to take up every issue which is concerning the welfare of the people, concerning the national interest, and also ensuring that dignity of the house is maintained. So you will never see any of the top leadership and the senior leaders from the Bharatiya Janata Party and NDA doing any theatrics in the house. You never see. And if any member has been lifted physically, uses the marshal, it happened only during the UP and Congress regime. Not a single time, despite suspension of certain members, in BJP's time, not a single member has been physically Sir, lifted Rajya so far. Sabha, whatever happened in the Rajya Sabha. That is what they did. They danced on the top of the table. Yet, not a single instances where any member has been physically lifted and thrown out. They did it. So you have to see comparatively how our approach has been, because our approach is basically a reflection of our thinking. Mr. Rijiju, I just wanted to remind you before we have heard a very senior leader of the BJP calling the then Prime Minister Mauni Baba. We have heard the Prime Minister talking about Which member in which house? Advani ji in the Lok Sabha. And also Prime Minister telling... So Mauni Baba is not Prime Minister abusive calling, word. talking about the former Prime Minister that he's like a man who is taking a shower with a raincoat wearer. That's not in the house.
It Listen, was in the House. listen, It was in the Rajya Sabha. let me clarify one thing. There are many words and many inferences you draw during the course of debates. It's a, of course, we are very careful about the public discourse. Now, what I said, I just want to add to that. While giving speeches, there may be remarks which are not appropriate or distasteful remarks. You have to see who has said what. Now, if you keep calling Prime Minister chore, now if you say Prime Minister's weak, it is a description. Mauni Baba means you are not actually speaking out, because that time Sonia Gandhi ji calls the shot. So Prime Minister is basically silent in all the political matter. But Prime Minister is a political figure. So a Prime Minister of a nation cannot be silent. So in that context, Advani ji had said Mauni Baba or Kamzor Pradhan Mantri. It is very different. You see, you all are very senior people here. If you call somebody weak Prime Minister, undecisive, these are descriptive, this can be. But tum chor hai, chor kya hai? So you can't abuse or you can't use a word which is unparliamentary. In 2019, चौकीदार चोर बोला, क्या हुआ फिर नतीजा? राफेल चोर बोला, क्या हुआ? Yeah. बोफोर्स तो हुआ I ना. have heard. बोफोर्स तो हुआ ना. That is why I am repeatedly asking you all to be quite attentive in what I'm saying. When court has proven guilty, लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने कन्विक्ट किया, तो उसमें अगर चोर बोलता है तो because it is a convicted case. You call Prime Minister chor, you must be able to differentiate the standards of language. If Bofors had happened, it had happened. It is a factual thing. There was no conviction. अरे भगा not दिया. yet. नहीं. अरे आप क्या बोल रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस वाला तो नहीं बोलना चाहिए ऐसे. इंडियन एक्सप्रेस is the institution where I have full faith, and I believe those who are associated with Indian Express will clearly understand what is considered to be a clear-cut prima facie case and what is a conjecture or just an allegation. Sir, who is convicted in Bofors is not an allegation. You have to respect the great lady Chitra ji. You have to respect all those people who are involved in those cases, those who have made the allegation and later proven. So Bofors or a coal scam and Chara Gotala, you can't compare it with Rahul Gandhi's allegation about Rafael and this Chokidar Chor allegation. People have given a befitting reply to all those allegations. But sir, can the language be different from chor? I mean, I agree with you, there have been convictions of some politicians, but in political debate, can better words be used? जैसे भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ, rather than saying XYZ is chor. Do you agree with that? I fully agree with using better language. Otherwise, what is language for? If you can use anything, anytime you want, भाषा का मर्यादा क्यों बोलते हैं? Sir. Anywhere, language is important. And for you people, you are better in using words than me. You are questioning Sir, it because I have heard even worst terms you used are, for you are, women leaders. you in all the House. are having the full right to question me. So I appreciate that. I'm just justifying and trying to make a case that use of better language is always preferred. Manoj. Another concern for the opposition has always been the government's decision to push through the bills without much consultation, not discussion, I'm saying. So some 16% of the bills were referred to standing committees in the last Lok Sabha. It was some 28% or something before that. During the UPA time, it was 70%, 60%. So
less and less bills are now referred to the standing committee for wider consultations, and there are disruptions most of the time. It gives the government a chance to hold the debate in under an hour or just 2 hours, just some in the short sharaba, the bills get passed. So does that not reflect badly on the parliamentary? I definitely agree with the deterioration in the standards of parliamentary functioning. I fully agree with that. But then I don't want to again and again justify by blaming the opposition alone. What I'm saying is, within the opposition party, not all opposition leaders or members are responsible for what has happened. Within the Congress party, I don't want to name, senior Congress leaders and many other MPs who are from opposition party keep on telling me that please do something so that parliament can function. But if the entire agenda of the opposition party is driven by one or two failed leaders, it is very difficult. It's a kind of a tragic situation. After all, who are the biggest victims? It is the opposition MPs. That day, there was one award function organized by very prestigious uh, private groups to award some of the outstanding parliamentarians. I had spoken there at length. So my point was very clear. At the end of the day, an MP has to go back to the people. How will you show your performance? It is totally dependent on your performance in the House. If the parliament doesn't function, government business doesn't stop, but it stops the MPs from speaking. Who are the biggest losers? It is the members. So if you have a cumulative assessment of the entire functioning of the parliament, you will realize that opposition MPs stand to lose the most, and government doesn't lose anything because government carries out with its business. The only concern which the government has is that enough debates and discussion do not take place. That is the only concern. In terms of technical, business and other issues, government is okay. But for democracy, definitely it's not okay. We want to have better quality, higher standards of parliamentary debates and discuss all the time. There was also a convention of giving the deputy speaker post to opposition. In the last Lok Sabha, there was no deputy speaker. Even now, there is no indication that the post is vacant. So, what is stopping the government from showing that grand gesture and There is convention. giving the deputy speaker post? So, this also shows the government is also not making No, any effort to reach out. there is a convention. It's not very specific rules. There is a convention, and I agree with that. But it depends on circumstances, your understanding with the opposition parties. So you cannot- are admitting that there is no understanding with the opposition parties. No, the opposition party will have to come and ensure that our differences are political. But in terms of running the house, there should be no differences. No, Appointing deputy speakers. have you offered? No, that I the- can't say right now because, as I said, it depends on circumstances. Jatin? Sir, we witnessed in the last session something very unprecedented, which was the election of the VP as well, sudden resignation followed by the election procedure, and so you were also the election. You were also the election manager for Election agent. election agent for the manager was Rajnaji. So, would you like to tell us anything about what happened, sir? Why this sudden? I mean, because you obviously were in the thick of things. Why this happened, sir, number one, and secondly, you did actually speak about one form of consensus after the results. You thanked opposition MPs for
voting for their conscience. And Yeah. there were around a dozen extra votes which came to Radhakrishnan ji's stand. So More than 30. 30. More than 30. So that's actually more than 2,000. So anything about these? See, the election of the vice presidential candidate is by secret voting, and it's by your conscience. So that on that context, I said, because there's no whip, it's a secret voting. So MPs are free to vote. You can't coerce. It's in the glare of the media, and the entire voting is also live. Voting is also captured live. The entire process, right from coming to the going inside the voting room, everything is live. And all the MPs are voters. In that context, I said that so many opposition MPs have voted for the NDA candidate. So naturally, as a parliamentary affairs minister and as an election agent of our candidate, it is a moral duty on my part to extend gratitude and thank the members, those who voted for us. You can't buy MPs, you can't coerce MPs. As I said, everything was live. So it is an obvious case that, see, if they said that you purchased the MPs, are MPs purchasable? That means they themselves are accusing their MPs that their MPs are sellable. You can't use such words for MPs. If it is a transparent vote, like through the whip, then the seat numbers, voting, everything is captured. You know who has voted where. But in secret voting, you can't accuse anybody. But you didn't address the other question, the first part of the question. That should, have its own sweet time. But what I want to tell is, the person concerned has already stated in the letter. So I need not add anything to that, because the reasons is stated in the letter, resignation letter. ऋषि जी, मैं दीप्तिमान तिवारी हूँ। मैं होम मिनिस्ट्री कवर करता हूँ और संघ परिवार कवर करता हूँ। I must say that when you were in the ministry, you were quite generous with journalists. You used to spend most of our time in your room. होम मिनिस्ट्री जमाने में Home Ministry, yes. So, I have two questions. One is I want to add to Manoj's. There appears to be, a trend in your government that first pass the bills and then seek opinion of the people. So, that is why we see that you pass the bills and then there are nationwide protests. आप CA लाते हैं, फिर nationwide protest हो जाता है. आप जम्मू एंड कश्मीर का बिल लाते हैं जो कि किसी को पता ही नहीं होता. मॉर्निंग में आधे घंटे पहले जम्मू कश्मीर का बिल जो है वो MPs को मिलता है. आप ऐसे ही वक्फ लॉ लाते हैं और उस पर हंगामा होता है. फार्म लॉज आप लाते हैं और अल्टीमेटली 1 साल के बाद आपको उन्हें वापस लेना पड़ता है. तो ये जो रिलक्टेंस है सरकार का, आप लेबर कोड लेके आए और आपको 4 साल लग गए उनको कोडिफाई करने में. तो ये जो रिलक्टेंस है सरकार का कि बिल लाने से पहले एक वाइडर कंसल्टेशन कर लें, सबको कंसेंसस में ले लें, एक पब्लिक ओपिनियन ले लें, ताकि जो है सड़क पे प्रोटेस्ट ना हो, गोलियां ना चलें, लोग ना मरे. ये आप लोग पहले क्यों नहीं करते? कि हमेशा बाद के लिए क्यों रखते हैं कि पहले पास कर दो उसके बाद देखा जाएगा? आप पार्लियामेंट का संदर्भ में जो कह रहे हैं वो अपने एक जगह है, लेकिन इशू कोई अचानक इशू नहीं आता है. चाहे राम मंदिर का इशू हो, चाहे वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, आर्टिकल 370 हो, ये तो बीजेपी का वर्षों से, दशकों से ये तो एजेंडा रहा है. तो नया अचानक कुछ नहीं है, ये पुराने ही है सब. और बीजेपी का जितना महत्वपूर्ण निर्णय है और सरकार का जो भी पार्लियामेंट में बिल लाते हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अचानक लाए हैं. हाँ, प्रोसेस में सीक्रेसी होता है, कैबिनेट डिस्कशन सीक्रेसी होता है. कैबिनेट से पहले हमारा PS कोई जानकारी नहीं रहता कैबिनेट में क्या चीज़ आने वाले हैं.
ये तो रूल है। जब तक हम कैबिनेट में पारित ना हो तो ये बाहर नहीं बोल सकते हम। इसलिए आपने देखा होगा मोदी जी के समय में 11 साल हम पार हो गए हैं, एक भी कैबिनेट एजेंडा हम लीक नहीं हुए। कांग्रेस के ज़माने में तो कैबिनेट मीटिंग भी चल रहा है और बाहर भी पैरेलली ब्रॉडकास्ट हो रहा है। हम ये नहीं कर सकते। हम जो प्रथा है, सिस्टम है और उसका जो सैंक्टिटी है, उसको हम कभी भी खारिज नहीं कर सकते। मुद्दा पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, प्रोसेस में आपको लगता होगा सीक्रेसी है, तो ये तो हमारा तरीका है और ये अच्छा है, क्योंकि हम कैबिनेट का डिसीजन को भी अगर हम बिल्कुल बाजार में जाएंगे वो तो ठीक नहीं। लेकिन जो चीज़ डिबेट के लिए जाना है वो जाता ही है। वक्फ अमेंडमेंट में मैंने जैसे बिल टेबल किया और अपोजिशन पार्टी ने कहा कि समय चाहिए, हमने जेपीसी में भेज दिया। जन विश्वास बिल जेपीसी भेजा है। हमने अभी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट है उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया है। उसी प्रकार से जो चीज़ बहुत वाइडर कंसल्टेशन डिलिब्रेशन चाहिए उसको हम भेजता है। तो आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा टेक्निकली मैं करेक्ट कर रहा हूँ। प्रक्रिया में सीक्रेसी होगा, इशू कभी भी सीक्रेसी में नहीं है। हमारा पुराना हमारा सोच है, हमारा पक्ष है, वही हम लेके आए हैं। ये 131st amendment which you have mentioned in the agenda, was it discussed, was it cleared by cabinet? Which one? The Chandigarh, taking out the and giving the appointment of वो तो 240. प्रपोजल था, वो तो विड्रॉ भी हो गया। बट आपने कहा कुछ भी अचानक नहीं होता। Yeah. ये हाँ। अच्छा। चंडीगढ़ बिल वाज लिस्टेड, इवन द बीजेपी पंजाब यूनिट वाज टेकिंग नहीं, मनोज माइक। ऐसा नहीं, वो मैटर क्लोज है। वो तो सरकार ने बोल देना, उसको तो विड्रॉ किया। प्रपोजल किसका लेवल से आता है वो उस पर आप क्यों ध्यान देते हैं? सरकार क्या किया है वो इम्पोर्टेंट है ना। सर हमारे पास सरकार तो, का ही एजेंडा है ना सर। अरे मैंने वही कहा ना, तो अल्टीमेटली सरकार क्या किया उस पर जाइए ना। प्रपोजल तो हजारों आएंगे, सरकार खुद भी तो हर मंत्रालय का प्रपोजल होता है, वो थोड़ी ना हर चीज़ कैबिनेट में जाते हैं। जो अप्रूव किया है प्रधानमंत्री जी जो अप्रूव करेंगे तभी तो कैबिनेट में जाएंगे। इसलिए क्या क्या सब्जेक्ट मैटर आया है उस पर आप मत जाइए। आखिर में सरकार ने क्या फैसला लिया है उस पर आप देखिए ना। जनरली बिल्स व्हिच आर क्लियर्ड बाय द कैबिनेट व्हिच विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विल बी लिस्टेड इन द बुलेटिन। नहीं, अब किसी ने अनौपचारिक इनडायरेक्टली या इनफॉर्मली कोई शेयर किया होगा तो मालूम नहीं, बट मैंने शेयर नहीं किया। जब पार्लियामेंट का जो एक्सपेक्टेड एंड अपकमिंग बिल्स है, बिजनेस है, वो जब तक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बीएससी में प्लेस नहीं करेंगे तब तक किसी चीज़ का आप औपचारिक नहीं मानना चाहिए। So you put the bills in the bulletin without discussing any नहीं, such. वो बुलेटिन हम जो प्रपोजल आता है तो हम रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो हम जो अभी तो बीएससी मीटिंग हुआ ही नहीं है ऑफिशियली। तो जब मंत्री बीएससी में प्लेस करते हैं 30 को हम ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे। वी लिसन टू द अपोजिशन लीडर्स कि आप क्या क्या इशू प्राथमिकता दे रहे हैं। सुनने के बाद शाम को बीएससी है लोकसभा का, फिर उसके बाद राज्यसभा का 5 बजे है, तो उस पर जो हम रखेंगे प्लीज टेक दैट एज द ऑफिशियल पोजीशन। बीएससी तो बिजनेस फाइनल करेगा, यहाँ पे बिल आप Bills. इंटेंशन अपना एक्सप्रेस किया है कि वी आर इंटेंडेड टू ब्रिंग दिस बिल। नहीं, प्रपोजल आता था हम लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको आप डिसीजन नहीं मानना चाहिए। So you mean to say that whatever we are seeing in this agenda, it is just your intention? इंटेंशन नहीं, वो तो अवेलेबिलिटी को बता रहे हैं ना कि आपके पास क्या क्या आया है, प्रपोजल क्या क्या आया है। अल्टीमेटली क्या लेना नहीं लेना तो वो तो मैं बताऊंगा ना वहाँ पे मीटिंग में। Okay, Hari Krishna. हरी कृष्ण शर्मा नाम है मेरा, मैं एग्रीकल्चर में लिखता हूँ। आपका नाम से ही तो हम लोग जी। चर्चा हो। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। सर एक तो डिसरप्शंस को आप एक तरफ रखिए, बट नंबर ऑफ डेज सेशन इज प्लान, पर्टिकुलर सेशन जैसे लाइक अभी विंटर सेशन 15 सिटिंग्स प्लान की गई है, और 2014 से 2024 तक आप देखिए द नंबर ऑफ सिटिंग्स ऑफ लोकसभा एंड देन कंपेयर इट प्रीवियस 10 years से 2004 to 2014
the number is definitely down. You would agree with it. So that is one. And second, sir, ये जो आप देर रात को सदन चलाते हैं 3 बजे तक 4 बजे तक मणिपुर जैसे बहुत क्रिटिकल इशू पर सेंसिटिव इशू पर रात को 4 बजे सुबह के 4 बजे आप डिस्कशन करते हैं, इससे किसका पर्पस सॉल्व हो रहा है? बिकॉज वहां से वही एमपीज बैठे हैं जिनको बोलना है, बाकी एमपीज भी नहीं है जो उनको सुन सके, लोग सोए हुए हैं। तो कम से कम जब ये व्यवस्था है कि 11 बजे से 6 बजे तक चलना चाहिए सदन, तो आप नंबर ऑफ डेज बढ़ाइए, आप चलने दीजिए। आप बहुत ही सहानुभूति रखता है एमपीज के ऊपर में, Of course ये we अच्छी do. बात है। Our representatives. 2:30 was the time that Manipur bill was taken up. सर वो टीवी पे भी नहीं आएगा, अगले दिन अखबार में भी नहीं आएगा। देखो हम न्यूज़ के लिए नहीं करते हैं, Oh wow. हम जो न्यूज के लिए नहीं चाहिए वो नहीं करेगा। नहीं, ऐसा है एक पॉइंट जो आपने कहा नंबर्स ऑफ डेज कम हुआ है, वो पिछली 2 सेशन में जब डिस्कशन नहीं हो रहा, ऑपोजिशन कहा कि हम हाउस चले नहीं देंगे, तो हमने जल्दी जल्दी बिल पास कर दिया, हमने हाउस कर्टेल कर दिया। वो कारण हमारे वजह से नहीं है, हमको मजबूरन हाउस का डेट को कर्टेल करना पड़ा क्योंकि ऑपोजिशन चर्चा नहीं चाहते थे बिल्कुल। तो ऑपोजिशन चर्चा नहीं चाहते थे तो गवर्नमेंट ऑलरेडी बिल में हमने प्रोविजन डाल दिया। हमारे सरकार की तरफ से जो मेंबर बोलेंगे वो वही तो बोलेंगे जो ऑलरेडी बिल में है, इन सपोर्ट ऑफ द बिल। उसको क्रिटिकली अगर उसको डिफरेंट व्यू लेना या सजेशन या अपोज करना है तो अपोजिशन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम चर्चा में भाग नहीं लेंगे, हम हाउस चलना नहीं देना चाहते, ये कहता है अपोजिशन एमपी, तो फिर हाउस लंबा चल के क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ जो मजबूरन अपोजिशन पार्टी के जो बर्ताव है, उनका जो हरकतें हैं, इसके वजह से हाउसेस का कुछ दिन कम हुए हैं, सरकार की तरफ से नहीं। सेकेंडली, मैं पहला जो आपको बोलते हुए और लिस्ट का जो बात है उसको मैं बोलते हुए आपको जवाब देना चाहता हूँ। ये जो अपोजिशन का बिहेवियर और जो हाउस चलने नहीं देंगे जो एटीट्यूड है, ये प्योरली इट इज़ ड्रिवन बाय पॉलिटिकल एजेंडा एंड it is encouraged by some of the opposition leaders who think that by disrupting the parliamentary proceeding they will gain politically. So I give the wise appeal. My appeal is not how to behave. My appeal is the opposition party should be wiser, because disruption is leading to their loss of faith and also लूजिंग ऑफ इलेक्शंस। फायदा नहीं हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और उसके साथी हारते गए, एक राज्य के बाद दूसरे राज्य हारते जा रहा है। वो प्राइमरीली उनका अपना व्यवहार के वजह से वो हारे हैं, सब्सटेंस नहीं है। लोग बहुत जागरूक है, इंडियन पीपल आर वेरी मैच्योर्ड पीपल एंड दे सी थ्रू एवरीथिंग, द इंटेंशन, the behavior and the conduct of the leaders. दीप्तिमान, एक मेरा सवाल पार्लियामेंट से जी। ये है, आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं और इन सितंबर वी सॉ वायलेंट प्रोटेस्ट्स, you know, the Buddhist minority and the Muslim minority in Ladakh have been demanding 6th schedule, statehood and protection for land and jobs for the past 6 years. And you know, people there say that you know this entire violence happened because you know the government has taken so much of time in assuring the people of Ladakh that they will be either given statehood or any kind of protection, either 6th schedule or similar to 6th schedule. And what has happened is that you know after reorganization of Jammu and Kashmir, the National Commission of Scheduled Tribes had said that 6th schedule should be given to Ladakh. Even then, Tribal Affairs Minister had gone to Ladakh and promised that 6th schedule will be given. So obviously people were hoping that this will be given. BJP in its manifesto put that 6th schedule will be given. So you created this hope in Ladakh that you know they will get 6th schedule or similar protections for land and jobs and culture. But in the past 6 years you failed to give even your job protection has come
ऐसा है जम्मू आपको क्या लगता है सरकार ने वहाँ पे जो माइनॉरिटी है उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने में बहुत देर कर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो जिस परिप्रेक्ष्य में आप बात रखे हैं उसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वहाँ के जो आम लोगों का ज़िंदगी और उनका राइट्स 2014 से पहले है, या विशेष करके जब से 370 हटा है, मैं तब से अगर कहूँगा तो आम लोगों को जो विकास का फ़ायदा जो मिला है पहले का मुकाबला ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप लद्दाख में कहीं भी जाइए, रोड एक से बढ़कर एक रोड बन गया है। हर गांव में मोबाइल सर्विस है, बिजली है, पानी की व्यवस्था किया जा रहा है। ये है, कुछ लोगों ने माहौल ख़राब करने के लिए जो किया है, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो बहुत क्लोजली मिलता हूँ लोगों से, मेरा टच में है और वहाँ के लोग मुझे मिलते रहते हैं, अभी भी मिल के गए हैं। तो मैं इसको, क्योंकि हम पार्लियामेंट सेशन के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं इसको डिटेल से बोल करके दूसरा स्टोरी मैं खड़ा नहीं करना चाहता हूँ इस वक्त। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो गृह मंत्रालय से बातचीत करके जो ऑफ़र किए हैं और उनको एक ड्राफ्ट पेशकश करने के लिए कहा गया है, उसके बाद भी मैंने कई लोगों से मिला है, वहाँ शांति है और लोग समझ रहे हैं कि कुछ लोग माहौल ख़राब करने के लिए किया है, अदरवाइज़ वहाँ का जो लीडरशिप है और गृह मंत्रालय का साथ जो बातचीत चल रहा है उसको सही तरीके से अगर चलने दिया जाए तो उसी में ही भला है। और कोई बीच में आकर के राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए जो कर रहे हैं, उससे लद्दाख का ही नुकसान होगा, ये लोगों को समझ में आ रहा है। But Mr. Rijiju, I mean, you are from the Northeast. I just wanted to know, I mean, like, it is something very, like we were all amused by what happened in Ladakh that time. अब लद्दाख का- Sonam Wangchuk फिर आप was a दूसरा person. क्वेश्चन रिसीव No, कीजिए, no. मैंने बता Sonam दिया। Wangchuk was a person whom the BJP and its leaders have endorsed. And all of a sudden, how come he became a, somebody who's under, the charges of, threat to national security? So, is there anything wrong with the region or the people or with the BJP? I am bothered about the common people. I don't want to get into a specific person because I have a larger responsibility to look into. हमारे मिनिस्ट्री से मैं लेह में भी गया, करगिल अंदर तक गया, कश्मीर के अंदर में आम कश्मीरियों से कई मर्तबा मिलना हुआ और मेरा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से कई स्कीम्स हम दे रहे हैं। वहाँ जो जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, मैं सबसे मिलता हूँ और जो कदम मुझे उठाना मैं कर रहा हूँ। इसलिए एक दो विशेष जो शख्सियत है उनसे मैं कोई अलग से टकराव या उनके बारे में बात करना मैं अभी पसंद नहीं करता हूँ। मैं जब करगिल गई, मैं वहाँ मुहर्रम में मजलिस में मैं वहाँ पूरा साथ में रहा, फिर इस बार शुरू वैली फेस्टिवल में गए, सब खुश है। भारत सरकार जो काम कर रहे हैं सब लोग खुश हैं। इसलिए कोई एक दो अगर एजेंडा लेकर के चला रहा है तो मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता हूँ। Asad? Sir, I'd like to ask you another question on the Ministry of Minority Affairs. Sir, the Umeed portal was launched in June and it's almost been now close to 6 months. The deadline is very close, but in most of the state Waqf boards, the registration of the Waqf properties is still a fraction of the total number of them. Is there any consideration to extend the deadline of December 6th or because I think a very small fraction of properties have been registered so far? ऐसा है, yes, the deadline is approaching fast and I have got representations from various sectors for extending a date. I can't extend the date because it is in the act. I can't change the act unless the parliament itself changes the provisions for the relaxation in the timeline. But what I can say as a window is, first of all, my request is everybody should now get into Umeed portal without any delay.
Secondly, if there are reasons which are quite understandable or special circumstances is preventing them to get registered, then the tribunals can extend it. The tribunals can give the date. Sir, just another question on minority rights. Like we see during elections that some very senior BJP leaders go to states and don't use the best languages for the minority community. Like recently, Mr. Giriraj Singh went to Bihar and said that made some comments calling the Muslim community namak harams. As the minister of पूरा minority, कम्युनिटी को नहीं बोला होगा, किसी एक को या दो कहीं कुछ घटना हुआ होगा, मैं इतना स्पेसिफिक नहीं जाना चाहता हूँ. but as the Minister of Minority Affairs, has this been something that you've ever flagged to the BJP top brass that elections we need to show more restraint regarding? See, first of all, in democracy, how much you can get into what people say, what should be said, or how much to be said, and also to clarify. So my position is very clear. As a Minister for Minority Affairs, I have excellent relationship with all the communities. Even the Parsi community, which is the minuscule of within the minority, they are left with only 52,000. We are taking up a special project, not only to arrest the declining of population, but to sustain and increase it. So that much effort our government is doing. That is what Prime Minister's सबका साथ सबका विकास means. But Mr. Giriraj Then also अरे गिरिराज जी पे आप क्यों जाते हैं बार बार? वो Sir, he is a fellow minister. he is a minister, sir. नहीं, what I am saying is, अगर मैं हर मिनिस्टर या दूसरे का क्लैरिफिकेशन ही देते रहूँगा तो फिर मैं अपना बात नहीं बता पाऊँगा. अभी मैं सऊदी अरब गए लास्ट वीक 2 weeks बैक. इतना शानदार मेरा विजिट रहा और सऊदी सरकार के साथ MOU किया और हमारा वहाँ उम्रा में जितने मुसलमान यहाँ से गए, उम्रा में तो जाते रहते हैं साल भर, और तैफ में जब उम्रा में जितने हमारे मुस्लिम्स यहाँ हिंदुस्तान से आए, मुझे देखा, सब लोग पहचान लिया और सब प्राउडली कह रहे हैं दूसरे को, और हजारों लोग जाते हैं. देखो हमारे इंडिया से हमारे मिनिस्टर आए, किसी देश का मिनिस्टर वहाँ गए नहीं है. और मैं जब गया तो उस उम्रा में जाने वाला लोग का दिल में कितना खुशी से झूम उठा है कि उन्होंने कहा दूसरे को, देखो हमारा हिंदुस्तान का मिनिस्टर आया है. तो आई हैव ए वेरी पर्सनल रेपो एंड वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऑल. सिखों के साथ हमने अभी स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाया. 32,000 Sikh youth not only have been given skill training, but they have already been absorbed, जॉब मिल चुके हैं, कंपनी के साथ काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में. उसी प्रकार से बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए, क्रिश्चियन स्कूल्स के लिए, मेडिकल के लिए बहुत चीज़ हम कर रहे हैं. तो उस पर फोकस कीजिए जो पॉजिटिव पे. Mr. Rijiju, yeah. Introduce yourself. My name is Shahid Parvez. So just a few days back, the president of a leading Muslim organization, which also took part in freedom struggle, Jamiyat Ulama-e-Hind. Jamiyat Ulama-e-Hind's president, Arshad Madni, just a few days back, he said, he made a statement saying that in America, in New York, Zohran Mamdani can become the mayor. In London, Sadiq Khan can become the mayor. But in India, the Muslim community has been targeted by the government to prevent them from rising, to prevent their elevation to leadership roles. How would you address such concerns of discrimination among the largest minority? The best way is to ignore these kind of statements. India is totally and fully democratic in electing its leaders. If I start deciding who should be leader, then what will be the role of the electorates? So it is the people who decide, and our constitution is very clear. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी डिस्कशन हुए हैं, कल कॉन्स्टिट्यूशन डे था. एक चीज़ मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि पीपल आर द सुप्रीम.
The sovereignty of India lies with the people of India. Mr. Rijiju, sorry. Us- He was referring to across the board, leadership roles across the नहीं, board. आप- Not just necessarily BJP. in politics only. नहीं, लेकिन आप तो फिर अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? अगर आप ऐसे उस वे से देखा जाएगा तो इसमें देखिए मैं इसलिए इसको थोड़ा सा आपको कटल करके कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ जिसने ये बोला है उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि अगर हम उसको जवाब देंगे तो फिर मेरा जवाब बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं जब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का पद संभाला तो मैंने एक चीज़ कहा, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, कि हिंदुस्तान के अंदर में माइनॉरिटीज का जो फ्रीडम, जो अपॉर्चुनिटीज है, मैं किसी राष्ट्र में दिखाई नहीं दिया। और मेरे जीवन काल में तो मैं 155 देश घुमा हुआ हूँ, मैंने किसी राष्ट्र में माइनॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिवर्स रोल हो जाएगा कि हिंदू किसी और देश में माइनॉरिटी हो जाएगा। मैं माइनॉरिटी, किसी भी देश का माइनॉरिटी का जो बात करता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर में माइनॉरिटीज का जो फ्रीडम, जो राइट, जो अपॉर्चुनिटीज है, किसी राष्ट्र में नहीं है। और उसी संदर्भ में मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि इंडिया से कोई माइनॉरिटी भाग की गई है, या डिबेट डिस्कशन होता है, भाग की गई है शरण लेने के लिए किसी पड़ोसी मुल्क में, आप नजर नहीं आएगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल देके बताया था कि जब तिब्बत में समस्या हुई, सारा तिब्बती इंडिया में आया। म्यांमार का इतना ज़्यादा बॉर्डर है, लेकिन जो म्यांमार में डेमोक्रेसी पर क्रैकडाउन हुआ था तब भी उस समय सारा जो एक्टिविस्ट है इंडिया में आए। श्रीलंका में श्रीलंका तमिल का जो प्रॉब्लम हुआ, वो लोग भी जब इंडिया में आके शरण लिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज है वो भी यहाँ आए। उसके बाद में बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम हुआ, वहाँ के लोग भी इंडिया में आए। मैं एक परिप्रेक्ष्य को बता रहा हूँ कि यहाँ से ऐसा नौबत नहीं आया कि कोई माइनॉरिटी भाग की गई। जैसे कि मैं एक माइनॉरिटी हूँ, मैं खुद एक माइनॉरिटी हूँ। हमारा धर्म और मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, इसको किसी ने गाली दिया होगा, किसी झगड़ा हुआ होगा पर्सनल लेवल में, लेकिन भारत में ऐसा परिस्थिति नहीं आए कि हमारा दिल में और दिमाग में कभी ये भी सोच आ सकता है कि इंडिया छोड़ के जाना है क्योंकि यहाँ डर लगता है या यहाँ सेफ नहीं है। ये जो माहौल पैदा हुआ कि बीजेपी आने से पहले कितना बार यहाँ नरसंहार या यहाँ ये कम्युनल टेंशन हुए हैं। हर कम्युनल टेंशन की वजह से आप अगर ये जो सारा लोग कहेंगे कि मैं छोड़ के जाऊंगा देश, ऐसा तो हुआ नहीं कभी, क्योंकि हम होम मिनिस्ट्री में रहे हैं, हमारे पास पूरा डेटा है कि बीजेपी आने से पहले कम्युनल राइट्स कितना हुआ इस देश में। उसका कंपेयर में तो बीजेपी सरकार में तो 5% भी नहीं हुए, लेकिन एजेंडा इतना जोर से चलाया। पहले तो मॉब लिंचिंग करके जो घटना हुए हैं अलग अलग जगह में हुए होंगे, लेकिन कब से हुए हैं ये सब चीज़। अब एजेंडा तहत उसको फ्रंट में लाना, मॉब लिंचिंग करके, फिर अवार्ड वापसी बोल के एक चलाया पर्टिकुलरली। इस तरीके से स्लोली करके इन लोगों ने एजेंडा चलाया, लेकिन एजेंडा सक्सेस नहीं हुआ, जिसके वजह से मुझे आपको बताना पड़ा कि अगर कोई कहता है कि यहाँ माइनॉरिटी को लीडरशिप के रोल में आने नहीं दिया जा रहा है, सिस्टमेटिकली दबाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि मैं खुद माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ और हमने कभी भी इस मुल्क के बारे में गलत नहीं सोचा, तो मुल्क मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों करेंगे। अगर आप मुल्क में रह करके मुल्क के खिलाफ बोलेंगे तो उसका अगर कोई उसका रिएक्शन करता है तो उसका मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, क्योंकि झगड़ा, रिएक्शन, एक्शन वो आपस में होता है। लेकिन जब तक आप दिल और दिमाग से हिंदुस्तानी है, मैं गारंटी से कहता हूं कि हिंदुस्तान से ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर मुल्क माइनॉरिटी के लिए कहीं नहीं है। निखिल, हेलो सर, निखिल घाणेकर। मेरा सर सवाल लेके ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के ऊपर है कि हम ये अक्सर देखते हैं कि स्पेशल मेंशन जब होते हैं या कोई एक नोटिस दिया जाता है, मेंबर्स talk about certain issues, they target the opposition talks about the government, and there are certain instances where the chair को अपील किया जाता है कि certain proceedings should be expunged.
आज के ज़माने में जब हम लोग ये सारा लाइव स्ट्रीम करते हैं, और मैं समझता हूँ कि रिकॉर्डिंग से एक्सपंज करना एक वो पोस्टेरिटी के लिए होता है, बट ये कितना अभी रेलेवेंस है इस चीज़ का? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी अगस्त में आप ही के एमपी है राधामोहन दास जी अग्रवाल, जो उन्होंने एक सवाल उठाया कि लीडर ऑपरेशन खड़गे जी उठते हैं एक विषय को लेके, ही स्पीक्स ऑन अदर इश्यूज इज व्हाट ही एलिज्ड, और घनश्याम तिवारी जी थे चेयर में, उन्होंने कहा कि इसको सोशल मीडिया से हटा दीजिए। सो हाउ राइट इज दिस प्रोसेस व्हेन एवरीथिंग इज लाइव स्ट्रीम? ये तो सिर्फ हमारा इशू नहीं, ये समाज का इशू। इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू पार्लियामेंट, कोर्ट का भी ऐसे है। अब कोर्ट का सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है, ये लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग भी, और जजमेंट नहीं है। कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जज कुछ रिमार्क करते हैं, उसको न्यूज़ बनाते हैं, लेकिन जजमेंट में तो वो आते नहीं है। तो ऐसा ही ये पार्लियामेंट आपका जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स वगैरह जो इशू है, ये भी सिमिलर है। तो इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू पार्लियामेंट, लेकिन टेक्निकली मैं ये मानता हूँ कि अगर जो चीज़ अनपार्लियामेंट्री डिफाइन किया गया है और उसको कोई मेंबर यूज़ करता है और एक्सपंज हो जाता है, तो उसको जो चलाते हैं न्यूज़ या बाहर, वहाँ भी उसको कायदे से हटाना चाहिए। लेकिन हाउ मच इट इज़ इन्फोर्सेबल, दैट हैज़ टू बी डिस्कस। उसमें तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूँ कि मीडिया का, चाहे वो आपका जो मीडिया का जितना बॉडीज़ है, रेगुलेटरी जितना बॉडीज़ है, उसके साथ में भी हम लोग भी बैठना चाहिए। पार्लियामेंट, कोर्ट, जुडिशरी, मीडिया, हम लोग सबको बैठ करके इस पर चर्चा करना चाहिए। ये सिर्फ सरकार या पार्लियामेंट का इशू नहीं है, मीडिया और कोर्ट का भी इक्वली सेम है। मैं मानता हूँ सबका कंसर्न है। सर, मैंने जो एग्जांपल स्टेट किया था, जो साइट किया था, दैट इज स्पेसिफिकली रिगार्डिंग अ पर्सपेक्टिव गिवन बाय एन ऑपोजिशन और अ गवर्नमेंट, आई मीन एमपी ऑफ द गवर्नमेंट्स पार्टी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये पर्सपेक्टिव की बात है, not necessarily always it relates to unparliamentary word or statement, but a perspective given to the chair, and the chair is taking a discretionary call on this. So how right is that? नहीं, चेयर का डिस्क्रिशनरी में तो मैं क्वेश्चन कर नहीं सकता हूँ। पावर दिया गया है कि चेयर डिसीजन इज फाइनल। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपने जो सवाल उठाया वो वाजिब है। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन एंड वी ऑल हैव टू सिट एंड डिस्कस टुगेदर। Yeah, just two questions, we'll wind up. सर, इधर दीप्तिमान, मैं जरा आपको नॉर्थ ईस्ट लेके चलता हूँ। आप नॉर्थ ईस्ट से हैं भी और आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। वहाँ पे 2 साल से हम मणिपुर में अनरेस्ट देख रहे हैं। मेइतेई और कुकी के बीच में एक स्ट्रगल चल रहा है। वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए हैं और अभी तक जो है जिसको नॉर्मलसी हम एक्चुअली कह सकें वो स्टैब्लिश नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट्स रूल लगा तो नॉर्मलसी तो नहीं है। जो कुकी कम्युनिटी है, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी आती है, वो एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रही है। कई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में सिक्स शेड्यूल का प्रावधान भी है, जो कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि मणिपुर में इसकी संभावना है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है? देखिए, मणिपुर में जो घटनाएं हुए हैं वो तो सबको मालूम है, और ये कई सालों से मणिपुर में समस्या आ रहे हैं। एक भी जान जाती है तो बहुत ही हम सब के लिए चिंता की बात है। वन लाइफ, इवन इफ इट इज लॉस्ट, इट्स एक्सट्रीमली ट्रेजिक। इन द पास्ट, years after years, Manipur was witness to many such problems। जब कुकी नागा क्लैश हुआ था, कुकी का आपस में भी जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में हुआ था, मेते कुकी में जब हुआ था, पहले का मैं बात कर रहा, तब भी और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि इस बार हमारा सरकार का समय में, मोदी साहब का समय में जो ध्यान दिया गया है, जब अनफॉर्चुनेटली कुकीज़ और मेतेज़ के बीच में जो समस्याएं खड़ी हो गई, जितना ध्यान दिया गया है, गृह मंत्री जी पर्सनली और हमारा जो जूनियर मिनिस्टर है, ऑफिसर्स है, सबको मणिपुर भेजना, जो करना, इसका बराबर ध्यान पहले कभी नहीं हुई। इसलिए हम मानते हैं कि अभी शांति के पथ पर वापस लौट रहे हैं। तो हम सबको मिल करके, उसमें सेंसिटिव मैटर है, इसमें इधर उधर बयानबाजी नहीं करते हुए अपील करना चाहिए कि मणिपुर में शांति के लिए सब सहयोग करें। सरकार जो एफर्ट कर रहे हैं उसको सब सहयोग देना चाहिए, और ब्लेम गेम या
पॉलिटिकली इसको उठाएंगे तो उससे समस्या का हल तो नहीं होगा।